for you guys today is we're going to be covering the backend part of this course. Okay, so I'm going to start off with the basic introduction on what the backend can achieve, and then we're going to be making a sample backend. We're going to be initializing something, and we'll go into more complexities as the classes go on. So just to give you guys an intro, let me just share a screen so you guys can see everything, and do let me know if you guys can see my screen. So can you guys? Okay, I think you guys. If you guys can see, just drop a message so I can at least know that's visible to you guys. Okay, that's good to hear. Okay, anyways, okay, so we're gonna start off with what exactly do we mean when we say the backend of a Flutter application. So as Sohaib has been teaching you for the past couple of days, the front end is when you have an application and you're talking about the parts of it that are linked to displaying. So for example, you're talking about widgets, component, etc., etc. Now, when we talk about the backend is all about databases. So it's about retaining that data permanently. And all the logic of your application is going to be dependent on this. So, for example, if you make a page or an e-commerce app and you can visually see, okay, these are these products, these are things displaying over here on this page, etc., etc. Now, the next step to that is, okay, how can I fetch data so that it's dynamically available? How can I store it to the database? Essentially, your app is going to be useless without anything such as a backend, right? And so when it comes to the backend, you're going to have some major concepts that you guys need to know. The first is the database that you guys will be using. In our case, that's going to be Cloud Firestore. So Cloud Firestore is essentially one of the libraries of Google, right? And basically what it's for is it essentially allows you to to build and to build databases which have pre-made things. These are no SQL databases, and they have already have things like authentication and Google services and things like that. So it's called Firebase, and the database name itself is Firestore, right? And so we're going to go about starting that in a second. And right in the very beginning, I'm going to have you guys set up the whole console. So if you guys are with me, this is a bit of a hands-on experience. You guys would have to make your profile right now and continue working with it so you guys can continue making the database successfully, right? So yeah, just let me start this app over here while I work on that. Okay. Anyways, so let me just send this link so you guys can actually see what I'm doing alongside what you're doing. Okay. And I want you guys to follow this link, and I'm also going to follow with you guys, although I have the setup, so you guys can see exactly what's going to be happening. So the first thing is you're going to need to make an account in Google Firebase, right? So in Firebase, actually before I start all of that, let me tell you exactly the kind of things you'll be doing once you have this whole thing set up. So once you have this whole thing set up in the previous classes, you made some widgets, you made some visuals, etc., etc. Now what you're going to be doing is you're going to be saving parts of those visuals in somewhere. So you might be saving like a text piece of information, and you're going to be say that this is now stored in the database, and I'm going to be retrieving it now over and over again, right? So for example, the project I made was a carpooling app. So in a carpooling app, which is very similar to Careem or Uber, you want to save your rides and then retrieve them later on, right? So that's what you're going to be doing basically. You're going to be using get calls to retrieve information. You're going to be using add calls and post calls to add information, and then you're going to be using update calls to edit the existing information, right? So anyways, so if you go on this link over here that I mentioned, for the first thing you're going to do is you want to log into the Firebase console. Right now, this is what the Firebase console looks like. This is going to be whatever ID you have. So it might ask you to make an ID the first time you do it. And then what you're going to do is you're going to add a project, right? I already have a project, but for this sake, I'm going to be entering a new project, right? Let's say Flutter bootcamp, right? Okay. And okay. And now you're just going to go on with this. You're going to continue with this. Default account for Firebase. You don't need to add a new account for this. And then you just create your project. So you guys will also see the exact same screens I'm seeing. So if you guys have any errors while following this, message me the errors right now. Just text them on this meet call so I can address them in real time, or else you guys will be facing issues with this. Right. So
Okay. So that means that our new project is ready, right? We're going to continue this. And as you can see that, can you please repeat what we have to do? Sure, I'll repeat what we have to do. I've sent a link in the meeting tab, in the meet. I don't know if you guys can see it. I'll send it again. And for those of you who don't have it, and what you guys have to do is, the first thing you have to do is go to that link, because it essentially contains all the instructions that you guys will have to follow from the start to the end. And we're going to start from the end, from the beginning, and we're going to go to the end of these instructions. And these will be required for you to functionally use the app, right? आपको काफ़ी सारा सेटअप रिक्वायर्ड होता है फायरबेस को यूज़ करने के लिए. इस सेटअप के बगैर जो है ना आपका गुजारा मुश्किल होता है. You can use, अब obviously you can use pre-configured things, लेकिन आपको जब अपनी ऐप बनाएंगे तो आपको हर दफ़ा अपना एक नया प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, right? So anyways, let's go back to, okay, now as you can see, अब वो जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था वो प्रोजेक्ट बन गया, right? When I clicked on create a new project, after that creating a new project, I just clicked on the default options and I clicked on create, right? Now what you want to do is you want to add an app to this, right? So we're going to go to this and we're going to have to add a package name, right? So to add a package name, what you have to do is you kind of have to go to your Android and you have to find the package ID or package name, whatever it is, right? So in my case, it's com.example. But you can change it to be whatever you want, right? It can be whatever you want, and you just name it and you copy it over there. You have to make sure you have to copy it from the Android bundle, because that's kind of important. But in my case, it's the same for both of them. So you can just paste it over here. And the next thing you want to do is you kind of have to add your app nickname, whatever you want to add it. I'm just using things that I've used before because it's easier in my case, but you guys can do whatever you want. How do you find the package name? Okay, you want to go to your whatever terminal you're using, VS Code, etc., and then you want to search across the whole thing, and then you want to search for com dot. So com dot is going to show you what the name your package has, right, in the default. And if you go to com dot, it's actually in the Android file, right? So you just want to search through this in the so in my case, as you can see, it says com.example.backend tutorial, right? Now this is I have different certain instances running at the same time, but you just want to look for your Android manifest, or to the Android manifest.xml file. We just type that down. Android manifest XML file, and within that XML file, we're going to have a package, and you just want to copy the whole thing, and then just want to paste it over there, right? So you went over here and you copied it, right? Obviously, I'm running two applications at the same time, so for me, मैं किसी एक पे भी add कर दूँ तो उस पे add हो जाएगा, दूसरे पे add कर दूँ तो उस पे हो जाएगा. You just have to make sure that's the same for that, right? And then the app nickname. This is something that's optional, so I'll just call it workshop app, right? And then you want to register the app. Okay, it's gonna take a few seconds for you to register the app. Okay, and now it's going to give you certain instructions you guys have to follow, right? And then you guys have to follow all of these instructions bit by bit. So the first thing it's saying is, as you can see, download Google services.json. So I'm doing this side by side with you guys, even though I've done it before in a new project. So you guys can kind of see what you have to do exactly, right? तो आप इस पे जाएं और इस फाइल को आप डाउनलोड कर लें, ठीक है? Google services.json की फाइल होगी, और फिर आपको इसको प्लेस करनी होगी अपने ऐप की डायरेक्टरी में, ठीक है? और इसका सबसे आसान तरीका ढूंढने का ये होगा कि आप अपनी जाए माई एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है? इसके अंदर let's go to the project Outlook. You can see the whole application, right? And then you kind of want to go to app, and it's going to have build and SRC within it, and alongside the SRC. So if you go to the app over here, Android build app SRC, yeah. Wait, give me 1 second. It's verifying it's the right file. Okay. So adjust. Just give me a second.
Yeah. So beside the build or create, exactly. So this is the place you want to take it, and beside that you're going to take the Google services.json, and you're going to put the file there, right? So we can also search it direct. If you guys use Android, it's a bit easier. You can do just search for for the build or created file directly, and just within its adjacent directory, uh, you can put it inside. So then you want to go to whatever file you have and just copy it in the right place. Once you've done that, which I've already done before, so now you're going to add the Firebase SDK, right? And in the SDK, you're going to have to make some changes. So you have to go to this existing build.gradle file, right? So you want to search whatever you're using, you want to search it in Android Studio. There's a general searching thing, but if you guys are using VS Code, you can just search it using Command P or using the whatever the searching thing is called, the Explorer, and you click on the and you search for the exact file name, right? So the project level build.gradle file. Okay, once you're in the build.gradle file, now you want to search for the things that they have said over here. There's going to be this place called build script, which has repositories. उनके अंदर Google और Maven को आपने बस ऐड करना होगा. Google Maven Central बस आपने ऐड करना होगा, right? तो आप इस पे जाएंगे, repositories, right? Okay. So in my case, the Google and Maven Not Central have already been added, so I don't have to add these things. तो और इसके बाद आपकी dependencies के लिए जाना होगा, and dependencies के लिए you have to add this Google services.json, right? So let's go to dependencies, and in this is going to need placed, so you just place it over here. ठीक है, उसके बाद आप जाएंगे और दो चीज़ें और ऐड करनी है, बस आपने all projects पे जाना होगा उसके, all projects you can see over here. Actually, keep in mind, the build.gradle file is not the build.gradle/app file. It's just the build.gradle file, right? So if you're going to search for it in VS Code, make sure when you search for build.gradle, don't go for the one that has Android app. You just go for the one that has Android in it, because that's project level. सही है, उसके बाद आपने class path वगैरह ऐड कर दिया. Class path को ऐड करने के बाद you're going to have to add these final two things, which is repositories के अंदर जाएं, all projects के अंदर, और उसके अंदर Google Maven Central ऐड कर दें. ठीक है, Google Maven Central मेरे केस के अंदर पहले से एडेड था, right? ठीक है. Now you have to go to your module app level build.gradle file, right? So this is the build.gradle file within the app. ठीक है, और इसके अंदर आपने Kotlin की version पे जाना होगा, not a Java version. Java's version is very different, and you have to add these changes. There are a few of them. You just have to copy paste the things. I'm just gonna go and show you guys do them side by side. So we go to the build.gradle file in the Android app, and within this app, you're going to go and add the com.android.application file to this. So we copied it to clipboard, and we have to add it over to in the plugin section, right? So command F. Okay, so in the case that the plugins aren't there, you can just add the thing directly and copy it. And so that's what I did in the build Gradle app file. I'd make sure it's within the app directory. So you're going to the correct directory and just save those changes, and also add that to the list of dependencies, right? So you go to the dependencies, and within the dependencies, you want to add these two things. So you want to add this implementation platform thing, and the second, Firebase Analytics, right? So it's just a bunch of copying, pasting. The instructions are going to be there for you, right? It's not like something जो बहुत technical है, बस वो आपको करना है और आपको finish करना है इस process को, right? So now you just added that,
और आपका इससे बेसिकली ये होगा कि आपका बेसिक सेटअप आपका कंप्लीट हो जाएगा, राइट? तो इस बेसिक सेटअप के अंदर आप जस्ट याद रखें, आपने जो फाइल डाउनलोड की थी, यू पुट दैट इन द राइट प्लेस अलोंगसाइड द बिल्ड और क्रिएटेड फाइल। सही है, उसके बाद आपने कुछ चेंजेस किए थे, उन चेंजेस को आपने इधर दिखा दिए, यू शुड चेंजेस ओवर हियर एंड या मेक श्योर यू डू ऑल द थिंग्स करेक्टली। आप इसके अंदर कोई भी गलतियाँ करेंगे तो आपके बाद के अंदर शो यू गाइस एरर्स, राइट? तो how do I find the package name? Um, okay, so the package name is done by going over here, just searching for, okay, you go to the Android manifest file, right? I send it over there, the Android manifest.xml file. Let's go to this file and within it, search for the package name. So if you can see my screen over here, you click on Android manifest.xml, right? And it's in one of these files. And within this, you can see that the package is equals to com.example.backend tutorial. Okay, I hope that answers your question. Where to put the JSON file? Okay, you have to put the JSON file alongside the Gradle file as specified. So it depends on your project structure. Like you have to see that. Let me just open that for you guys so you can see. So if you go over here, open the Explorer a second. Let me just show you guys the whole thing. Gradle. Okay, as you can see, there's a build.gradle file over here, right? So alongside that build.gradle file in the same directory that's in, you want to paste JSON file, right? तो मैंने एक केस के अंदर की हुई है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ वापस, just to show you. So you can just copy this over here. So let's see. Yeah, just make sure you put in the right thing because it has to be adjacent to the build.gradle, not below it or above it. So for example, if you take this and you put it outside, it's gonna be somewhere else, and you don't want to do that, right? तो आई होप आपको दिख गया गूगल सर्विस डॉट जेसन बिल्ड और ग्रिडल के साथ है, ठीक है? और या दैट्स इट, जस्ट लेट्स जस्ट गो नेक्स्ट फिनिश दिस एंड आपका सेटअप कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? एंड जस्ट डू कंटिन्यू टू कंसोल और फिर आपका कंसोल बन गया, ठीक है? इस कंसोल पे आप जाएंगे एंड यू जस्ट वांट टू क्लिक ऑन दिस ऐप, राइट? एंड ये आपकी ऐप बन गई. सो नाउ आई होप यू गाइस हैव सेट अप योर बेसिक थिंग, ठीक है? Okay, so अगर किसी को कोई सवाल है, I'm just gonna wait for a few minutes. What do you want to sign into Firebase? Okay, so when you sign into Firebase, let me actually just show you again. Sign into Firebase, you actually have to go and add a new project, right? So you want to add a project. And I'll actually show you. You want to add a project, enter whatever project name you have, continue करो आप, ठीक है? Continue करके जिस चीज़ चेक करो आप, दो तीन चीज़ें पूछेगा आपसे, enable Google Cloud Analytics, select a default account, and then click on add Firebase, and it's going to create your project. So I did this once, I'm doing it again just to show you. Firebase CLI is going to be used for a different thing. Okay, अगर कुछ cases के अंदर हो जाता है आपका use CLI के बगैर. अब I actually did the installation quite a long time ago, so I have multiple things set up beforehand. I believe you should, because आपको कुछ चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़ेगी Firebase CLI की, ठीक है? तो आप डाउनलोड कर लो. उसकी मैं आपकी लिंक दे देता हूँ कि उसके साथ देता है, उसके साथ एक लिंक है, I believe. Yeah. This is the link for adding Firebase to your Flutter app for those of you guys who want reference. Let's go back to where the project was at. Where was I? No. Okay. Okay. Now, once you've got this app set up, now what we're going to do is we're going to add a database to it, right? So the database is going to allow real-time updates, powerful queries, and automatic scaling. ठीक है? तो आप इस पे जाएंगे, ठीक है? And just going to create a database, right? So कोई please miss ना करे इसको, ताकि बार-बार दिखाना ना पड़े. आप इस पे गए, you went on Cloud Firestore, and you clicked on create database. Okay, मैं Google Doc ही बना दूंगा, इसके सारी इंस्ट्रक्शन दिखा दूंगा. But for now, I want to show you guys live, ताकि आप लोगों को आइडिया हो exactly करते किस तरह.
start in test mode कर देंगे, ठीक है. And now we're going to start in test mode. You don't want to start in production mode क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं. अब test mode के अंदर it allows you to work with it quickly, but later on you're going to have to adjust the privacy. ठीक है, लोकेशन इसकी जो भी करना चाहो आपकी मर्जी है. तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता इस केस के अंदर. जनरली यू वांट टू यूज़ लोकेशंस दैट आर क्लोज टू व्हाटएवर यू डूइंग. In this case I'm just going to go with anything. Okay, then it's going to take a few seconds to provision it. Look, it's not the same app necessarily. I'm doing it for a generic app. ठीक है, so this is not for the same app. ठीक है, but if you have the same app, you can also put it on this. तो ऐसा नहीं है कि same app पे ही चलेगा और ऐसा नहीं है कि same app पे नहीं चलेगा. It's one of those things that is generalized. सही है. जो सोए पढ़ा रहा था वो he was teaching you how to make a Flutter application with a front end. Now I am adding a backend to a front end. So you can add that to the app you guys had if you want to. कि पहले से app बनी हो, नई app ना बनानी पड़ेगी. That's perfectly all right. Or you can make a new app and then we can work with that. So yeah. So okay. So over here you can see this Cloud Firestore is over here. So yeah, आप Cloud Firestore इधर आ गया. अब एक once the Cloud Firestore is over here, as you can see, आपका वो Flutter Bootcamp जो project name वगैरह है वो पहले से आपके पास आ जाएगा, right? Flutter Bootcamp वगैरह जो भी है, ठीक है. Then you're going to click on Start Collection, and so you can make a new collection. और इसके नाम collection कोई भी नाम दे देंगे, right? You can put an ID. So in our case, let's call it anything. We can call it books, ठीक है. और आपकी एक ID बन जाएगी, यानी एक collection बन जाएगी books की. When you say collection, it's essentially the same as a table almost, like you normally have in databases. और इस तरह MongoDB के अंदर आपका एक document होती है. It's really similar to that, in that you can add new things to it. It's going to ask for some basic things. Let's just do auto ID for now. Let's just field author type string, and the value is I don't know, Arthur, something like that. So as you can see, it's going to make a document in your Cloud Firestore. And once you have this document, you can see कि अच्छा आपकी एक database बन गई है. अब ये permanently host हो चुकी है. अब even if you close this and you open it again, what's going to happen is you'll be able to see the same document is there, right? Because it's permanent storage. ठीक है, permanent storage है. अब इसको अब next step ये आता है, we're going to now access this from the whatever IDE you're using on Flutter, right? Like in this, it's very important for you guys to come to this step क्योंकि इसके बगैर तुम move on नहीं कर पाएंगे. तो आप लोगों को कोई सवाल है तो अभी बता दें. कोई question हो कि आप लोगों ने setup नहीं काम किया हो कहीं तक हो, let me know. Because you guys are 35 students, I know किसी ना किसी को मसला हुआ होगा. So I'm going to wait for a few seconds. Document ID is the name of whatever. The document ID एक वो let me just open it in front of you. तो मिसाल के तौर पर जब if you want to add a document, ठीक है, this is going to be the primary key for whatever you want, right? तो जिस तरह आपके होते हैं ना, if you want to identify this when you retrieve it from the database, you're going to input the document ID as your primary source of retrieval. Okay, any other questions? किसी को इस console वगैरह के अंदर या चीज़ों को ऐड करने के अंदर build.kdl फाइल के अंदर चीज़ें ऐड करना किसी को मसला होया तो बता दे, because जो है if I move on तो जो है फिर मसला हो जाएगा, right? FireBase CLI isn't downloading. Let me show you. Okay. What do you mean it isn't downloading? Could you please be more specific? So I'll actually, did you guys, also by the way, one of the issues is that I use a Mac, and so the installation instructions are slightly different because it isn't trusted. Could you, it isn't trusted. देखो Mac के अंदर तो ये होता है कि when the file doesn't run, you just use sudo to run it.
So that's the solution with the Mac case. If you're using Windows, then for an exe file, it's not giving an option to run it. Did you try running it with administrator privileges? शायद उससे काम करे. If you can try that. But for those guys who want to download the CLI as well, because you're going to be needing this later on, you can go to this link for setting up this. It just says don't run. The exe file, I think then you can try, हो सकता है कि आपका एक computer का local issue हो. You can try disabling the firewall if that works. But I'll have to ask Sohaib because Windows और Mac पे जो है different errors देते हैं. तो या तो अपने स्क्रीनशॉट मुझे डीएम कर दीजिएगा, फिर मैं बाद में देख ले आपको बता दूंगा, और फिर जैसे डिफरेंट आते हैं. सो ये किसी और कोई इशू हो तो वो भी बता दें. ओके, आई थिंक इसका मतलब ये है कि आप लोगों से तकरीबन सबका काम कर रहा है. ओके, so now what we're going to do is let me just talk about a bit about the general functions you have of Cloud Firestore. आज हमारे Wait, the FireBase tool downloaded, but I'm still not being able to get past the first step that you said in setting up all of this. I've tried for like the first 15 step. minutes. Which first step in setting up? Are you talking Like, about I was trying to follow along. It's just not. I mean, which part nothing has exactly? been set up as of yet. Which part exactly? Nothing. Like, अच्छा, listen. आप मुझे ये बताएं कि आप project पे गए? Did you create a new project? If you can see. मैं उधर आपने जो लिंक भेजा था उस लिंक पे जाके वहाँ पर चलाने की कोशिश की, कंसोल चलाने की कोशिश की. उधर उन्होंने फिर मुझे बोला कौन सा ऐप बनाना है, उसके मैं फ्लटर पे क्लिक किया, लेकिन उसके बाद वो फिर बोल रहे CLI डाउनलोड करो, वहीं पर अटका था. उसके बाद मैंने उसको इग्नोर मार के नेक्स्ट पे भी किया. उसके बाद वो कह रहे फ्रॉम एनी डायरेक्टरी रन कमांड्स, और वो डायरेक्टरी तो कौन सी डायरेक्टरी है ये भी नहीं बता रहा. अच्छा, नहीं तो आपने क्या किया? You went to the FireBase CLI part directly. इसलिए मैंने चाहा था कि मैं पहले Firestore की बात कर लूं, क्योंकि CLI जो है ना, Firestore ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब मैंने आपके उसको फॉलो किया था, क्या कहते हैं, आपके लिंक को. मैंने वहाँ लिंक पे गया था, वहाँ पर कंसोल दबाया था, नहीं दबाना. I think let me just go to, could you send the link over here? I'll open it and do it side by side just to show you. Just send it on the Meet as a text file. आपको भी resolve करके देता हूँ. ओके, तो मेरे स्क्रीन पे तो ये आ गया. फिर आपने ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ, मेरे पास फ्लटर बूट कैम्प का वो आ रहा है, इसके पर मैंने क्लिक किया, उसके बाद सारे मसले स्टार्ट हुए. ओके, फ्लटर बूट कैम्प पे क्लिक कर दिया, ठीक है. अब इसका आपके पास क्या आ रहा है? फिर आपने क्लिक किया तो आपको क्या दिखाता है? Does it show you यहाँ this? पर हाँ, ये वाला पार्ट आ रहा था, ठीक है. और एंड इट टोल्ड मी टू, वहाँ पे बहुत सारे ऐप्स के सिंबल्स बने हुए थे, एंड्रॉइड एंड फ्लटर, तो मैंने फ्लटर पे क्लिक किया. नो, तो ओके, फ्लटर पे क्लिक करें, ठीक है. फ्लटर पे चले, ठीक है, वो भी सही है. फ्लटर पे क्लिक किया, फिर वहीं पर वो सारा फायर CLI वाला पार्ट आ जाता है. ओके, सो यू वेंट टू ऐप एंड यू क्लिक्ड ऑन फ्लटर. ओके, ये भी सही है. फायरबेस CLI, ठीक है. हाँ, ये यहाँ पर सारा मसला आ रहा है, इसके आगे नहीं बढ़ा. So let me just see if I can do something about that. Actually, Jana, आपने Flutter, when you click on add in the app now, you're supposed to actually click on the exact app you're adding. So generally Flutter app आप कर सकते हैं, it won't work, लेकिन उसकी configuration different होगी.
तो मैंने जिस तरह ऐप किए हुए, my apps are not exactly the app I've added, if you see it's an Android app because so आपको जिस तरह से रन करना होगा ना उस पर डिपेंड करेगा. तो मैं करंटली इसको एंड्रॉइड के एमुलेटर पे एक चीज़ रन कर रहा हूँ, राइट. यू कैन सी दैट्स रनिंग. तो आपको उस हिसाब से करना होगा. तो आपने नहीं तो फ्लटर हम लोग को क्या करना है? So yeah, when you click on add app, click on Android, right, and then click do these things. Android manifest वगैरह जो भी चीज़ें ऐड करनी होती है. Don't click on the add क्योंकि उसका डिफरेंट होगा. उसका फिर आपको CLI डाउनलोड करना पड़ेगा, काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस करनी पड़ेंगी. Got it? तो अगर मेरे पास फ्लटर ऐप हो ही नहीं, मतलब सॉरी एंड्रॉइड ऐप है ही नहीं, तो उसको कहाँ पे ऐड करूँगा मैं? नहीं, आपके पास एंड्रॉइड ऐप क्यों नहीं होगी? फ्लटर के अंदर आप एंड्रॉइड नो आई एम आल्सो एडिंग इट टू अ फ्लटर ऐप. बट एक फ्लटर के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, राइट. एंड्रॉइड होता है, iOS होता है, एंड देन इट्स अ नॉर्मल वेबसाइट वगैरह जो ओके, वेब सही वेब सही ठीक है. सही. सो या सो ओके. ओके, किसी और को कोई सवाल है तो वो बता दे बिकॉज़ if you guys get stuck here, moving on is going to get very problematic, very problematic क्योंकि आपके एरर्स पाइल ऑन होते रहेंगे. इन चीज़ों के अच्छे खासे एरर्स आते थे, हमारे टाइम पे भी काफ़ी सारे आए थे. No? Okay. If that's the case, that sounds great. So now what we're going to be doing is I'm going to go to the basic documentation for the Firebase app. तो Firebase के अंदर आपके certain basic functions होते हैं, right? Firebase के अंदर certain basic functions होते हैं. अब I'm assuming कि आप लोगों ने इस वक्त तक एक कुछ चीज़ बना दी है, ठीक है, और आपके पास ये सेटअप है, क्लाउड फायर स्टोर भी आपको दिख रहा है. अब इसके क्लाउड फायर स्टोर के अंदर आपको you can see over here whatever your collections are, you can see the documents. If you click on a document, you can see the exact document details. You can change them by clicking on the edit button. You can add whatever you want, right? You can add new fields, etc. So इससे आप लोगों को जैसे कंफर्ट बेसिक होना चाहिए बिकॉज डेटाबेस यूज़ करने के लिए आपको इसी को यूज़ करना होगा, राइट. अब इसके बाद आपके आते हैं फायर स्टोर के बेसिक फंक्शनैलिटीज़, ठीक है. तो if you click on if you go on Firestore documentation, you guys can easily see कि आप लोगों के लिए बहुत काम आएगा, ठीक है. इसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या है, ओके. And we're just going to go to the basics through them. मैं आपको दिखा रहा हूँ आपकी आसानी के लिए because I have these things available on my end, but I'm just going to go through them once to show you guys कि basic चीज़ें क्या है. पहले आपको बस ओवरऑल बता देता हूँ कि Firestore के अंदर होता क्या है. आपकी एक होती है add command. अगर आप किसी चीज़ को add करना होगा, you use it via the add command, right? So if I show you the practical uses of this, let's see the command f db dot add does it add passenger list, yeah, right. So actually else. No, I can't find an example exactly over here, but the way you're going to initialize it is that you're going to have this thing called initialize Firebase, right? So initialize Firebase at the start of your project, and इस तरह आपके बिल्कुल beginning के अंदर होगा. And once you've initialized it, उसके बाद you can use that same Firebase instance throughout your app, right? So आप अगर इसमें जाएंगे, you're going to go to your main dart, इसके आप टॉप पे जाएंगे, तो इसके अंदर आपका आएगा आपका you'll have to initialize Firebase app, right? इसके multiple syntaxes होते हैं. This is very important क्योंकि if you don't initialize, essentially this is basically saying कि इस Firebase की जो database है उसको मैं use कर सकता हूँ एक app के अंदर, तो आपको main function इसके initialize करना पड़ता है, ठीक है. अब ये second part ये आता है कि when you create them, आपको कुछ चीज़ें का सोचना पड़ता है. आपको पहले सोचना पड़ता है कि एग्जैक्टली आप डिज़ाइन क्या कर रहे हैं, राइट. सो इन माय केस आई वाज डिजाइनिंग अ कारपूलिंग ऐप, सो आई हैड टू थिंक अबाउट ओके इस कारपूलिंग ऐप के अंदर आपकी कौन सी टेबल्स होंगी, उन टेबल से कौन से फील्ड्स होंगे, उन फील्ड्स को किस तरह इंटरैक्ट करना होगा, राइट. सो दिस माइंडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ द बैक एंड वर्क्स, राइट. तो मिसाल के तौर पर अगर आप इसके प्रोजेक्ट को खोलें तो आप देखेंगे कि इसकी फाइल स्ट्रक्चर के अंदर you're going to have these things called models. Now, what is a model? आपकी जो भी डेटाबेस के अंदर एक आइटम होगी ना, उसका कॉरस्पॉन्डिंग मॉडल आपको एक बनाना पड़ेगा ताकि आप उसको प्रॉपर्ली एक्सेस कर सकें. इससे क्या मतलब है, मिसाल के तौर पे आप अगर बनाना चाह रहे थे कोई ई कॉमर्स वेबसाइट, आपको किसी शौक होगा आप ई कॉमर्स वेबसाइट का, तो उस ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर यू आर गोइंग टू हैव एटलीस्ट अ कपल ऑफ प्रोडक्ट्स. तो आपकी प्रोडक्ट्स की टेबल होगी, तो उस प्रोडक्ट्स की टेबल के अंदर आपकी कुछ जेसन वैल्यूज होंगी,
राइट? तो उन जेसन वैल्यूज मिसाल के तौर पे आपकी होगी उसकी प्रोडक्ट आईडी, फिर उसका होगा प्रोडक्ट नेम, हो सकता है प्रोडक्ट इमेज की आप यूआरएल स्टोर कर रहे हो सकता है प्रोडक्ट क्वांटिटी भी आप उधर ही स्टोर कर रहे हो, मिसाल के तौर पर जस्ट गिविंग एग्जांपल. नाउ द प्रॉब्लम इज व्हेन यू यूजिंग दिस इन योर ऐप, यू नीड टू हैव समवेयर कि आपका ऐप को तो पता चले कि इस ऐप इस डेटाबेस के अंदर चीज़ें हैं, उसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं. अगर आपको ऐप के अंदर डालेंगे नहीं, अपने कोड के अंदर नहीं डालेंगे, सो यू वोंट बी एबल टू रिट्रीव दैट इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली, राइट? वो आपको एक डिस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मिलेगी, ये नॉट प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मिलेगी, राइट? तो इसलिए आप बनाते हैं मॉडल्स, एंड दिस इज हाउ मॉडल लुक्स लाइक. सो फॉर एग्जांपल, आपका हमारे एक टेबल थी, उसका नाम था व्हीकल, राइट? व्हीकल इज वेरी ऑब्वियस व्हाट एग्जैक्टली व्हीकल इज, कि गाड़ी होती है मिसाल के तौर पे. अब इस जो व्हीकल का आप एक मॉडल बनाएंगे, उस मॉडल को किस तरह बनाएंगे, उसके अंदर आप उसको एसेंशियली विजुलाइज करना पड़ेगा कि व्हीकल की कौन कौन सी चीज़ें होंगी, राइट? व्हीकल कलर होगा, मेक होगा, मॉडल होगा, ईयर होगा, एसी होगी, कौन सी गाड़ी की टाइप है, सीटिंग कैपेसिटी क्या है, उसकी इमेज वगैरह क्या है, प्लेट नंबर क्या है, ठीक है ना? इज डिलीट इज जस्ट एन एक्सेस थिंग टू शो के इज डिलीटेड इन डेटाबेस और नॉट, ठीक है? सो द फर्स्ट थिंग you guys want to think about is making a model. Now I'm actually not going to have you guys make a model today because I want to give you the guys the concepts. When you start making things, you run into errors and things like that. So I'm just giving you guys the concepts. And then the next class, we're going to make everything. We're going to actually make a mini app which has a database attached to it. ठीक है? तो आपका फिर आपके पास एक मॉडल होगा, उस मॉडल के अंदर आप जेसन से कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम इट एंड टू इट, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई डू यू कन्वर्ट फ्रॉम जेसन टू जेसन? दिस इज बिकॉज आपको जब डेटाबेस से वो चीज़ आएगी तो वो डेटाबेस को एपीआईज की फॉर्म में आती है, ठीक है? एपीआईज आप लोगों को ये पता होंगे कि जो डेटाबेस एसेंशियली सेंड्स डेटा वाया दिस थिंग कॉल्ड एन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, वो इट सेंड्स द होल डेटा टू यू इन अ चंक, एंड देन दैट चंक इज प्रोसेस्ड बाय योर कोड. सही. अब मसला ये कि जो डेटाबेस है उसको तो सिर्फ ये पता है कि एक टेबल है, उसके अंदर 3-4 जेसन वैल्यूज हैं. अब जब आपके कोड को ये रिसीव होता है, आपके कोड को पार्स करना पड़ता है उस डेटा को, ताकि उसको प्रॉपर एक ऑब्जेक्ट बना सके, राइट? उसका ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं? ताकि बाकी सारी फाइल्स के अंदर उस ऑब्जेक्ट को यूज कर सकें. If you don't make the object, it's just going to be color, make, model here, but they won't be organized in any one place. You make it an object so that you can use it whenever you want. You can say vehicle dot color. You can say vehicle dot make. That's the point of a from JSON and a to JSON. So a from JSON will take as input a map of a JSON value. This is going to be your API call, and so we're going to convert it into an object, as you can see. And then a to JSON is going to do the opposite thing. It's going to take existing data, which is good, which is very useful when you want to send something to the database, and it's going to convert it into a JSON value and then send it back into the DB, right? So that's what a to JSON function does, right? And right now I'm just giving you guys a bit of an overview, right? कि ये किन किन चीज़ों की इंपॉर्टेंस होती है. तो ये होते हैं आपके मॉडल्स. So you're going to have as many models as you have different tables in the database. तो अगर आपकी database के मिसाल के तौर पे 6 tables हुई या 7 tables हुई, तो आपको 6 या 7 मॉडल्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है? उसके बाद एक चीज़ होती है, इट्स कॉल्ड रिपोजिटरीज, ठीक है? एंड रिपोजिटरीज एसेंशियली क्या होती है कि आप जब एक मॉडल बनाते हैं ना, और उसका एक एसेंशियली क्या कहें आप, एसेंशियली उसके कुछ फंक्शंस होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं, राइट? तो मिसाल के तौर पे जो मैं आपको बता रहा था क्रिएट करने की, डिलीट करने के लिए, इन दिस केस अगर आपको किसी चीज़ को क्रिएट करना है तो आप क्रिएट राइट कर देंगे. आपने फंक्शन बना दिया क्रिएट राइट का, उसके अंदर आप वो जो डीबी है, जो फायर स्टोर की जो भी डीबी होगी, उसके अंदर आप उस कलेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं. अब नाउ द थिंग इज, नॉर्मली इन दिस फाइल यू कैन ऐड दिस एनीवेयर इन द फाइल. यू कैन ऐड दिस इन योर front end code, in any code piece of code. But the thing is, you want to keep these functions separate, ताकि आपको फ्रंट एंड के बस कॉल करना क्रिएट राइट और ऑटोमेटिकली आपकी राइट बन जाए. योर फ्रंट एंड डज नॉट नीड टू नो हाउ दैट राइट वाज क्रिएटेड. इट जस्ट नीड्स टू टेक एज इनपुट द राइट and then create that right. So this is what the repository essentially does. It takes all the functions for the database and then uses them, converts them into normal functions, so the front end can just utilize them. I think someone asked me questions. Let me look at that. Yes, model is precisely, बिल्कुल आपने सही अल्फाज इस्तेमाल किए. मॉडल इज अ स्कीमा. जिस तरह आप डेटाबेस के अंदर अगर आपने mongoose यूज़ किया हो या SQLite यूज़ किया, you always make a schema. So in the same way, मॉडल भी आपका स्कीमा ही है. बिल्कुल बिल्कुल सही है. तो आपका ये हो गया. अब now this is just to show you just a little bit of, अगर आपकी डेटाबेस होगी, so in this case I've initialized FireBase Firestore DB is equal to FireBase Firestore.instance. इस DB को, this DB essentially contains the instance that is being used by your whole app, ठीक है?
तो आपको कोई भी फंक्शन करना होगा आपको db डॉट करके करना पड़ेगा. You have to do db डॉट. ठीक है. And then over here you can see a bunch of functions that you can use, right? जो आपको auto complete में आ रहे हैं, right? So मिसाल के तौर पे आप db डॉट collection करेंगे. So it's going to find a certain collection of a given collection path. So in this case, for example, आपकी collection path ये है, मिसाल के तौर पे I think I made books, ठीक है? So it's going to search for that specific collection within your whole database, ठीक है? उसके बाद अब जब doc करेंगे, it's going to search for that document within that whole database, right? तो मिसाल के तौर पे if you guys wanted to search for a given book, जिस तरह हमने बनाई हुई एक book, अगर आपको दिख रही हो, where was the database? Over here. So if you want to open this book, right? So what you would have to do is you would have to copy this whole document. Obviously, you won't copy it when you're coding, but just to show you guys, you copy this document ID, and it's basically saying that go to the database, search for all the books, search for the collection called books, and from that collection retrieve a document called this document. ठीक है, एक दफ़ा ये डॉक्यूमेंट आप रिट्रीव कर लेंगे, उसके बाद you can now use things to apply to that document. So you can use the .get function, you can use .read function, .set function for updating anything. ठीक है, दूसरी बात, अगर आपको कोई चीज़ ऐड करनी होगी तो you can just directly do add over here. ठीक है, and then you can add whatever data you want and just going to add it to the document directly. ठीक है, now this is just a basic outlook of what you can do with Firestore. And it's a lot. That's why I didn't want you guys coding a lot in the first session, just to show you guys exactly what you can do. And what you can do is let me show you an existing database that I have made, just so you guys can see कि इसकी जो है फायदा क्या है. So you can see that there's a database, उसके अंदर customers हैं, उसके अंदर rides हैं, और as you can see आपके सारे customers के individual IDs हैं, उनके बहुत सारे fields हैं, fields के बहुत सारे जो भी types होंगी, उनके arrays भी हो सकते हैं. मिसाल के तौर पे vehicles वगैरह का array, and you can have multiple of these collections. They have names, they have emails, everything. तो आपका जो practical life के अंदर जब आप आते हैं, so this is what you're going to be designing when you make a real life application. You need to store that data somewhere. Data is very, very important. And this is how you store the data. जिस तरह करीम की ride होती है, on the back end, this is what it probably looks like. You have your passengers, you have the date, the driver ID, you have the coordinates, you have the completed, is it completed or not, is it deleted or not, etc., etc. You have all of these things. You might even have the passenger requests. कितने लोगों ने request किया इस passenger को. You might have the waypoints. Waypoints का मतलब है कौन से रास्ते से जा रहे हैं. ठीक है, latitude, longitude के अंदर. So you have all of these things, right? And yeah, that's basically what you guys can do now. अगर आप लोगों का setup complete हो गया होगा, if it's functioning, so then you guys will be able to do this. काफ़ी लोगों के I'm sure errors वगैरह आए होंगे. इस तरह वो एक किसी ने Flutter को click कर दिया था, या किसी ने .json फाइल को गलत जगह पे डाल दिया होगा. I will upload a small document after this, which will show you the guys' steps to be able to do this properly. So you guys can follow that document, and then hopefully it shouldn't cause any problems on your end. So yeah, and uske baad, in our next class, what we're going to be doing is we're going to be making a small app. Is Firebase free to use? Yes, Firebase is free to use up to a certain point. Then after a certain number of users, or for certain paid services, for certain services that are a bit more complex, that are a bit more for large scale professional use, it becomes paid. But otherwise, yeah, it's free, just like MongoDB and certain SQL platforms as well. So yes, to answer your question, yes, Firebase is free. And so tomorrow we are going to be using. Sorry, Mudassir, you wanted to say something? No, I suppose not. So tomorrow we're going to be building, or day after tomorrow for that matter. जी फरमाएं. सर वो कहते हैं कि मतलब फायरबेस को बड़ी एप्लीकेशन में नहीं यूज करना चाहिए, वो मोंगोडीबी यूज करें, तो ऐसा क्यों? अब ये देखिए, डिपेंड करता है आपकी यूज केस पे, कंप्लीटली डिपेंड करता है आपकी यूज केस से. अब मिसाल के तौर पे फायरबेस के बड़ी एप्लीकेशंस के यूज होता है, डेफिनेटली होता है. मोंगो भी होता है. हर चीज़ के अपने फ़वायदे हैं और नुकसान हैं. फायरबेस से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मिसाल के तौर पर फायरबेस के अंदर होस्टिंग बड़ी आसान है. फायरबेस इज़ नॉट जस्ट फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट. ठीक है, फायरबेस का एक फीचर है डेटाबेस मैनेजमेंट. फायरबेस इज़ ऑल्सो फॉर होस्टिंग.
तो मिसाल के तौर पे आपने एक ऐप बनाई है, तो आपको ऐप जानते हैं कि वो ऐप लॉन्च हो जाए, तो लॉन्च किस तरह करेंगे? मोंगोडीबी तो आपको लॉन्च नहीं करवाएगा, राइट? अब जो फायरबेस है उस ऐप को लॉन्च भी करा देगा। यू कैन एक्चुअली पुट इन द यूआरएल, और उस यूआरएल के अंदर इट्स गोइंग टू मेक अ फंक्शन ऐप ऑन दैट यूआरएल, right? Just to show you guys, Vercel is this thing you can use to make apps as well and deploy them. And as you can see over here, it's deployed it, right? So you can see कि पूरी एक React app है जो आपकी deployed है, right? अब deployed किस तरह है? ये एक hosting service के through deployed है. अब इस केस में मैं Vercel use कर रहा हूँ. आपके केस के अंदर, if you're using MongoDB, you would need a separate app for your database and a separate app for your deployment, and then you would need a separate app for your security, separate app for your authentication. Chunki ye Google hai, it has all of these services available in one chunk, right? So yeah, you might say in terms of efficiency, it might not be the best, but it's very easy to use. That's why people use it, and that's why it's very good for teaching. So I hope that answers your question. Okay, so that's essentially what Firebase does and why it's used. And we won't be covering how to use hosting on it. In this, I might give you guys some instructions if anyone's interested. But we will be covering how to make a sample database app tomorrow in our next session. And in that session, what I plan to do is I want to make a small library app, right? So what you're going to be doing is you're going to be adding books to a database, and you're going to be retrieving those books, right? So the UI will not be complex. In fact, I'll give you guys some boilerplate code. तो आपके पास काफी सारी चीजें basic setup होंगी, ठीक है? And उसके हिसाब से आप लोग फिर वो पूरी ऐप बनाएंगे, and you guys will see on your own end कि आप database की चीजें push भी कर सकते हैं, retrieve भी कर सकते हैं, add भी कर सकते हैं, update भी कर सकते हैं. Okay, so मोहम्मद हाशिर साहब पूछते हैं कि what is this module, app level build और create file? यार हाशिर, it is आपकी देखो build और create files आपकी दो होती हैं. तो मैं आपको VS Code पे दिखाया था, मैं normally IntelliJ यूज करता हूँ, that's why I'm using IntelliJ. But in VS Code, if you press Command P, it's going to show you a lot of apps, a lot of files जो भी आपकी चीजें हैं. Now if you type build or Gradle, it's going to show you two Gradle apps, right? Gradle files, sorry. So इसके अंदर ऐप लेवल फाइल लिखा हुआ है, तो आप इसके अंदर जाएंगे और खोलेंगे उसको, तो आपको देखना पड़ेगा उसके अंदर कि इज इट द वन that's slash app or is it the one that's slash Android. अब आपको देखना पड़ेगा. If it's saying add Google and Maven Central and dependencies class path वगैरह, तो ये वो Gradle फाइल है जिसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इस तरह लगे. You can see the directory structure right over here. ठीक है? And if it's another, in fact, you'll have to show me an exact screenshot of what part you're referring to, because उसके हिसाब से देखना पड़ेगा. लेकिन the easiest way to check is कि दो ही Gradle files हैं, उन Gradle files के अंदर चीजें चेक करें वो है या नहीं. मिसाल के तौर पर build script इस फाइल के अंदर है, उस फाइल के अंदर build script नहीं होगी. You can see the build script is not over here. ठीक है, तो आपको इस हिसाब से पता लग जाएगा कि वो चीजें कहाँ वगैरह ऐड करनी है, right? So I hope that answers your question. Actually, the thing is, them saying app level is kind of ambiguous, because both of the files are app level. In fact, one of them is in app folder, but one of the files is in above level. So instead of looking at that specific, I just open the existing files and check कि कौन सी match कर रही है. ठीक है? Which one contains plugin? Which one contains the plugin? That would be this other app, the one that's within app. So you have to add that plugin. Yeah. In fact, another way to actually add the plugin is, if you don't want to add the plugin, this is one way to do it. But just to show you, if you can see my screen right now, आपका search करें, command F search करें plugin, command F करके, तो आपको इतना तो दिख जाएगा, apply plugin, com.android.application, apply plugin, Kotlin Android. उसको कॉपी पेस्ट करके करें नेक्स्ट लाइन पे, और जो ये चीज़ है ना इनको कॉपी करके उधर ऐड कर दें. तो com.android एप्लीकेशन तो पहले से एडेड है, com.google सर्विसेज वगैरह जो भी ऐड करना हो वो ऐड कर दें फिर मिसाल के तौर पे. ठीक है, वो इधर आ गया था. ठीक है, और आप इसको इग्नोर कर दें. ठीक है, तो that's the way you do it. You just press command F और ctrl+F जो भी है, सर्च करें उसको, प्लगइन को, और उसके आगे ऐड कर दें. ठीक है, ये चीज़ आप ये लोग याद करें. मैं एक और दफ़ा रिपीट कर देता हूँ. pubspec.yaml does not contain, well डिपेंड्स करता है कि आप प्लगइन में क्या मुराद है. अगर आपको मुराद उस चीज़ से है कि वो प्लगइन्स जो फायरबेस को इनिशियलाइज करने के अंदर है, से नहीं, pubspec.yaml के आपको नहीं जाना, राइट? अगर अगर आपको पैकेजेस पे जाना है,
तो वो अब spec.yaml के अंदर होंगे, बिल्कुल वो बात सही है, नॉट प्लगइन्स दो आप। Hey, Ibrahim bhai, जी जी, am I audible? या यस यू आर ऑडिबल, हेलो अब्दुल रहमान। Yes. Uh, as it is visible from the timer that this session might end in 5 minutes. Ibrahim bhai, how much of the content is left? We are finished. I've already told them that we're going to be covering the rest in the class tomorrow, and हमने basic setup कर लिया, बाकी जो है अगली क्लास Okay. में करेंगे। सही, तो सेशन बिल्कुल Okay, खत्म, best है best. ठीक है। सही है, Okay ठीक है, guys, ठीक है. so that brings a conclusion to our session. अगर आप लोगों को कोई सवाल हो सेटअप तो सेटअप में, तो आप प्लीज़ लिख दीजिएगा व्हाट्सएप के ग्रुप पे, एंड आई हैव अ लुक एट देम। फायर स्टोर के सेटअप के सवाल अलग बताइएगा, ठीक है, और कंटेंट रन करने के सवाल अगर किसी को हो, ऐप एरर्स उनको भी बता दीजिए, स्पेसिफाई कर दीजिएगा कि ये एरर्स हैं, एंड आई हैव अ लुक एट देम, ठीक है। अगली क्लास के अंदर वी गोइंग टू बी एक्चुअली यूजिंग द ऐप, सो यू वांट टू हैव योर एरर्स रिजॉल्व बिफोर हैंड, सही है। यू गैस कैन डीएम मी इफ यू वांट टू एज वेल, मैं लोगों को रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। और आई होप आप लोगों को जो है ये चीज़ रिजॉल्व हो जाए, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से आज के लिए काफ़ी है, ठीक है। Okay. खुदा Just before we end, या I like to add on कि आपके सेशन मोस्ट प्रॉब्ली 1 घंटे के होंगे, क्योंकि ये गूगल मीट ने रिस्ट्रिक्शन रख दी है कि वी कांट हैव अ मीटिंग मोर देन 1 hour. तो मोस्ट प्रॉब्ली वील until unless we arrange something, we'll have sessions for an hour only. Okay, या फॉर श्योर, ठीक है, गॉट यू, that's all. ओके ओके गाइस, Thanks everyone. खुदा हाफिज़।